Hi students, hope all will be fine. So student, I am going to start exercise 8.2 of chapter permutation and combination. I hope you watched my video, previous video. In that video was that basic concept about the permutation and combination. Yes. So student, in this exercise I am going to select one question from the exercise. Question is, in a class there are 22 girls and 17 boys. In a class there are 22 girls and 17 boys. Question number, this is the first, second part. Number of girls is equal to 22 and number of boys is equal to 17. Girls 22, number of boys is equal to 17. The teacher want to select either a girl or a boy to represent the class in a function. Teacher want to select either one girl or one boy. A word is using, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, R, OR, या तो गर्ल्स से सेलेक्ट करना चाहता है एक स्टूडेंट को, या तो वह बॉयज साइड से एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करना चाहता है. ठीक है, दोनों से नहीं, आइदर दिस और दिस. ओके. सो क्वेश्चन आस्किंग दैट, क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी वेज कैन द टीचर मेक दिस सेलेक्शन. कितने तरह से टीचर सेलेक्ट कर सकता है. इन हाउ मेनी वेज टीचर कैन make the selection. See, number of girls 22. One girl can be selected 22 ways. One girl can be selected 22 ways. One boy can be selected 17 ways. Okay. So one girl can be selected in 22 ways. ठीक है, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 22 है, तो हम किसी भी गर्ल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, इस तरह से 22 वेज में हम सेलेक्ट कर सकते हैं. एंड आर, one boy can be selected in 17 ways. One boy out of 17 boys में से can be selected in 17 ways. Okay. So total number of ways to select by teacher from the group of girls or boys, that will be, remove this, total number of ways to select one boy or one girl. One boy or one girl, that will be equal to 17 plus 22. 17 ways to select boys, 22 ways to select girls. So that is equal to 39. So total number of ways to select one boy or one girl, that will be equal to 39. Right? I hope that concept is clear. That once again I want to tell that number of girls we got 22 and number of boys having the 17. One teacher want to select either one girl or one boy for the represent in the class. That so one can be selected in 22. One right here, one girl
one girl can be selected in 22 ways. One boy can be selected in 17 ways. Total number of ways to select one boy or one girl, that will be equal to 39. ठीक है. By the fundamental principle of counting. Here because question was that or एक boy or one girl, but if in question given that one boy and one girl and one boy, and मतलब एक गर्ल से भी चाहिए और एक बॉय से चाहिए, तब क्या लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाते हैं. तब आंसर आपका आता कि नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट विल बी 22 into 17. ठीक है. बट हियर नॉट गिवन एंड आर, either girl or boy. So you have to solve this way, not by multiplication. So this was the question. Now take the next question. So student, question number second, third part selected from the exercise. I am reading, listen the question. Lata want to go abroad by air and return by ship. She has a choice of 6 different airlines to go and 4 different ships to return. In how many ways she can perform her journey? Journey means that going and coming. Then we will complete the journey. That will be one job. This should be complete. Then we can find out the way. Okay. So number of choice to go is equal to 6 airlines, and number of choice to return is equal to 4 ships. Okay. In question asking that in how many ways she can perform her journey, mean that जाना और आना. Okay. So 6 airlines, different airlines available. She can go by first, by second, by third, fourth, fifth, sixth. यदि वो पहले एयरलाइन से जाती है, ठीक है, then she can come back by 4 ships. That many number of ways to return, not by 4 ships, number of ways to return 4 ships. वो पहले से आ सकती है, दूसरे से आ सकती है, तीसरे से आ सकती है, चौथे से आ सकती है. she can come by first, second, third, fourth. मतलब पहले अगर एयरलाइन से जाती है तो आने की वे कितने हैं उसकी, 4 हैं. वह दूसरे एयरलाइन से जा सकती है, दूसरे एयरलाइन से जा सकती है. आने के चांसेस वही फर्स्ट शिप और सेकंड शिप और थर्ड शिप और फोर्थ शिप. या इससे जा सकती है S1, S2, S3, S4, या इससे जा सकती है S1, S2, S3, S4, या इससे जा सकती है S1, S2, S3, S4. One more having that either she can go by these airlines S1, S2, S3, S4. So if she is going by first airline, so how many ways she has to come back? 4 ways. 4 ways. 4, 4, 4, 4. How many total became that? 24. 24. It means to complete the job, mean the journey, she has the total number of ways is equal to 24. Yes, I hope that concept clear that.
Clear? Okay. If clear, so let me write. So if she goes by first airline, if she goes by first airline, then number of ways to return is equal to 4. ठीक है, एक कंप्लीट जॉब करने में 4 वे से वो कंप्लीट कर सकती है। और कितने शिप हैं? टोटल 6 शिप्स। ओके, सो by principle, so by fundamental, by fundamental principle of काउंटिंग, मैंने इसको बताया था कि 2 पार्ट हैविंग, 1 इज फॉर द मल्टीप्लिकेशन वाज एंड 1 वाज दैट फॉर द एडिशन। So by fundamental principle of counting, number of ways to complete her job is equal to 6 into 4, that is equal to 24 ways. Number of ways to complete her job. Job means that journey, आना जाना, आना जाना. So number of ways to complete her journey is equal to 6 into 4, that is equal to 24. Or in the place of job you can write that journey, no problem that. हमने लिख दिया उसको. Job means that complete the work. So this is the method to find out number of ways to complete her journey. Yes? Okay. Now one more questions I want to take. Now one more question from the exercise 8.2. Question number 4. First, find the number of 4 letters words. 4 letters word with or without meaning. चाहे meaning हो या meaningful हो, that is not matter. Which can be formed out of the letters of the word rose. R-O-S-E. R-O-S-E. This is the rose, a word formed by the 4 letters. We have to arrange this. So find a number of 4 letters words with or without meaning which can be formed out of the letters of the word rose. Repetition of letters not allowed. Letters repeat नहीं होना चाहिए. Letter repeat नहीं होना चाहिए. ये नहीं कि हम R लिख दिए उसके बाद पुनः R लिख दिए, O लिख दिए, O लिख दिए, S लिख दिए, S लिख दिए. No, not allowed. See, here this is the suppose 1, 2, 3, 4. 4 boxes having that. We have to arrange this rows. So how many ways will be that? In the question asking that, you find a number of 4 letter words. 4 letter word कितने 4 letter word या 4 letter से कितने word हम बना सकते हैं? How many words can be formed by using this? Meaningful or without the meaningful? ऐसा कुछ नहीं है, आप मीनिंग हो या ना हो, लेकिन रिपीटेशन नहीं अलाउ है, रिपीट नहीं करना है, टू नॉट रिपीट एनी लेटर. ठीक है, अब आइए 4 बॉक्सेस हैं. इन 4 बॉक्स से आपको वर्ड बनाना है. कितने तरह के वर्ड बन सकते हैं जो है बाय यूजिंग दिस.
चलिए, इफ फर्स्ट लेटर्स आई सेलेक्टेड आर, ठीक है, सो आर हियर, कोई जरूरी नहीं कि आर ही सेलेक्ट करें, ओ सेलेक्ट कर सकते हैं, एस सेलेक्ट कर सकते हैं, ई सेलेक्ट कर सकते हैं. सो फॉर फर्स्ट लेटर ऑफ दिस वर्ड, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट द लेटर विल बी इक्वल टू 4. 1 2 3 4. यहाँ पर कितने वेज होगा? 4 वेज. ओके. नाउ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. इन फ्रॉम दीज वन ऑलरेडी सेलेक्टेड, एक इसमें से हम सेलेक्ट कर लिए. ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. वन सेकेंड. 1 2 3 4. Having the 4 box, that 4 letters given that. Yeah. How many words can be formed by using that these 4 letters? For the first letter, we can select number of ways is equal to 4. 4 ways होगा. कैसे? हम R भी लिख सकते हैं, O भी लिख सकते हैं, S भी लिख सकते हैं, E भी लिख सकते हैं. इसमें से कोई लिख सकते हैं. यानी नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 4. तो एक लेटर इसमें से सपोज लिख लिया गया. अब बचा कि नाउ मनी रिमेनिंग दैट, नाउ रिमेनिंग दैट 3 बच रहा है. मान लीजिए हमने R लिख दिया. चलिए ठीक. OSE, we have to arrange here OSE. So we can arrange this 3 ways by 3 ways. मान लीजिए E हमने लिख दिया. Now for this 2 remaining, so here either O or S. यानी 2 वे से हम लिख सकते हैं और लास्ट में एक लेटर आपको बचेगा, 1 वे से लिख सकते हैं. सो टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 24. अब इसको लिखेंगे कैसे? हाउ विल यू राइट दैट? इसको लिखेंगे कैसे जो है? How will you write that? Number of ways to write first letter of the word is equal to 4. Number of ways to write the first letter is equal to 4. Yes, that is correct question. Number of ways to write first letter of word is equal to 4. ठीक. Second, number of ways to write second letter of the word is equal to 3. Number of ways to write third letter of the word is equal to 2, and number of ways to write fourth letter of the word is equal to 1. So total number of ways is equal to by fundamental principle of counting, number of ways to write the letters for word is equal to
is equal to 4 into 3 into 2 into 1, that is equal to 24. Right? So I hope that concept of these three questions are clear. The student, this much is enough for today. That in next video I will give some more. Thanks all of you. That student, this once again I want to remind that this is the logic chapter. That your logic necessary, that you first you think about that is needed, then you can understand. Otherwise easy भी है और difficult भी है. Okay, thanks all of you.